Namaste ji, namaste. So, torts. Now, what exactly is, torts? So, this is about the basics. I'd done a lecture like this earlier also, that's on the channel, but I believe that's pretty boring. So, I'm going to redo it. But now, this is also for the purposes of a LLB entrance as well, but mainly for UPSC Law optional, wherein you are writing essays on torts, or even in, let us say, Judiciary mains. यार आपको torts को समझाना हो, तो ये tort है क्या? तो first and foremost, वो tart नहीं है. कई लोग लिखते हैं टार्ट. टार्ट तो ओपन पेस्ट्री टाइप चॉकलेट टार्ट होती है. अब मान लेते हैं बिफोर गेटिंग इनटू फैंसी लॉ टर्मिनोलॉजी, मान लेते हैं दैट यू गो टू योर कोचिंग सेंटर एंड यू आर सिटिंग देयर ऑन योर टेबल. ऊपर से लाइट गिर जाती है आपके सिर पे. चलो सिर पे तो नहीं गिरेगी ज़्यादा या डैमेज, आपके सामने गिर जाती है आके. व्हाट डू? एंड लेट अस से यू वांट डैमेजेस फ्रॉम द कोचिंग एकेडमी गाय कि जी मेरे को मेरे ये जो डैमेज हुआ, मेरी किताब टूट गई, क्या पता हाथ पे भी थोड़ा बहुत स्क्रैच आ गया, ये बैंडेज भी लग गई, मैं जाके नर्सिंग क्लिनिक आई रैन टू द नर्सिंग क्लिनिक एंड देन दे हैड टू गिव मी फर्स्ट एड व्हाटएवर, took me time, so I need money, I need you to compensate me. What sort of a case will you apply on the coaching academy guy? Tort. Now if you want to send him to jail, then it's a criminal offense जो कि स्टेट पनिश करेगा, आप कुछ नहीं करेंगे, बट टॉर्ट में सारा काम आप करेंगे. इस बात पे तो हम क्लियर हो जाते हैं. तो टॉर्ट की क्या कोई बेयर एक्ट है? इट्स बेसिकली द इंग्लिश लॉ अप्लाइड टू इंडियन सर्कमस्टांसेस, बट इट इज प्राइमरली ऑफ सिविल नेचर. इट्स नॉट ऑफ क्रिमिनल नेचर, इट्स प्राइमरली ऑफ सिविल नेचर. नाउ अच्छा, एक एग्जाम्पल और हम करते हैं. चलिए कोचिंग वाला एग्जाम्पल तो हमने कर लिया. मनाली वाली स्काई डाइविंग करते वाला वीडियो आया था ना कि मैं डैश हूँ जो इसमें आया फलाना ढंकाना. लेट अस से कि उस आदमी का खुदा ना करे होता ऐसा कि दैट ही ब्रोक हिज लेग व्हाइल लैंडिंग. इफ ही वांटेड कॉम्पनसेशन फ्रॉम दैट गाय, वो जो पैराशूट पे भाई साहब जो उनको लेके उड़े थे और जो उनको कह रहे थे कि भाई प्लीज टांगे ऊपर कर ले, माफ कर दे मुझे, है ना. लेट अस से दैट अगर उन पे आपने केस करना होता about of that sky gliding guy, or rather the Manali guy, then which case it would have been a case of torts. अगर आपको पैसे चाहिए उनसे कि भाई अब मेरी टांग की रिपेयर, तुम्हें को मेरा बिल दे, you shouldn't have done this. So what is happening is like the coaching guy, your coaching guy owes a duty of care towards you. This guy also owes a duty of care towards you. Now जिनको थोड़ा सा ज़्यादा आता है वो कहेंगे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी आता सर यहाँ पे. तो हाँ था, मुझे भी पता है, मैंने तो बोला ही नहीं, बट दैट्स अ डिफेंस. डिफेंस इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी. वो सामने वाला कहेगा, वो जो पैराशूट में जो पीछे वाले भैया थे वो ये कहेंगे कि भाई यू न्यू सच अ रिस्क, यू वॉलंटियर्ड फॉर दिस इंजरी, सो आई एम नॉट लायबल टू पे यू एनी damages. Now what sort of damages are we talking about here? These are unliquidated damages, and if you have ever taken a law entrance you will understand that this is like the most frequent question. Unliquidated damages means they're not pre-decided. How do you pre-decide कि अगर कोचिंग में जी अगर ये लाइट गिर गई ना, ये पंखा गिर गया ना मेरे सिर पे, तो आप मुझे इतने पैसे देंगे? Obviously it cannot be written. So this is not pre-decided. So who will decide this? The code of law. And which code of law? If you are writing for the UPSC Law optional, this is the point that you want to mention. That section 9 of the CPC enables a civil court to try suits of a civil nature. Therefore, well, a civil court is going to try a case of torts. As simple as that. So if you are like preparing for Judiciary or UPSC Law optional, I now have a dedicated course on torts, which I'm shooting this in June 2020. I'm starting this out on my website, and I believe that we'll be completing this in the next 2 to 3 months. I'll leave the link in the description below. And if you want a very condensed form, so that is basically for Judiciary and UPSC Law optional, very dedicated, very detailed. But if you want it in a chota form, tailor-made for law entrances, then you can, it's part of legal or legal. I believe it's a pretty popular course who helps out in LLB entrances. Now after that shameless advertisement, let us now come back here. So now अब tort तो नहीं है, तो अब क्या है जी? It is basically a French word of the English word wrong. तो अगर wrong को मुझे फ्रेंच में बोलना हो तो मैं tort कह दूंगा. BHU में MCQ बहुत बार आपको देखने को मिलेगा.
Roman है delict. Delict is basically a violation of law. Roman word basically it is the equivalent of the Roman word, Roman legal term that is delict. And Latin में एक शब्द होता है tortum. Tortum से आया जी. Tort हम derive कर रहे हैं. Tortum is basically twisted conduct. So it is basically a violation of this. It's something that is wrong. You should not have done this to me. That is what. And now अब मुझे तुमसे पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें tort का केस लगाऊंगा. Section 9 CPC we have already discussed. अब आप अपने मेंस का आंसर लिख रहे हैं या आप अपना ऐसे लिख रहे हैं टॉर्ट्स के ऊपर, प्लीज मेंशन justice, equity and good conscience coupled. Basically these are the principles which is combined with the English law. ये दोनों चीजें combine करके based on Indian circumstances do we have the law of torts in our country. अब आप कहेंगे कोई बेयर एक्ट है, कोई सेक्शन नंबर होता है, नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं होता. Unliquidated damages the court decides. Now अब आप कहेंगे कि जी ऐसा है कि जी कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में फर्क क्या है. कॉन्ट्रैक्ट का जो कानून है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेसिकली देयर टू enforce for the other person to perform their part of the obligation. But tort is basically कि जी आपको लॉस ना हो. कैसे लॉस नहीं होगा, चलिए थोड़ा सा राइट समझ लेते हैं. तो ड्यूटी आई थिंक फंडे, मतलब ये एग्जाम्पल देने से मुझे आपको फंडा क्लियर हो गया होगा कि ड्यूटी है सामने वाले की आपकी तरफ. कैसी ड्यूटी है अभी आते हैं. हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका केस लगा किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या कुछ भी, तो आपका एक लीगल राइट होगा जो वायलेट हुआ है. तो ये कौन सा लीगल राइट है, और LLB एंट्रेंस वालों को तो ये पता ही होगा. कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, इट्स अ राइट इन पर्सोनम. मींस आपने सामने वाले के खिलाफ आपका ये राइट है कि जी आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट की साइड फुलफिल कीजिए. A tort is a violation of right in rem. So यहाँ पे this is a one-to-one fight happening, but this is a right in rem that you have against the world at large or the community at large. Like for example, I have a right, or anyone has a right कि आपकी कोई सामने जाके intentionally defamation ना करे. मतलब आपकी बेइज्जती कोई ना करे. ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक आदमी ना करे, कोई भी ना करे. और अगर कोई करता है तो फिर हमारे पास दो तरीके हैं हिंदुस्तान में. एक है आईपीसी का तरीका कि आपने सामने वाले को जेल में डलवाना है, तो आप आईपीसी में क्रिमिनल केस लगाएंगे क्योंकि आपको जेल की पनिशमेंट चाहिए. यू वांट द स्टेट टू पनिश देम, बट इफ यू वांट मनी आउट ऑफ देम, देन व्हाट डू? You apply for tort. तो मनी इज कॉल्ड डैमेजेस. बट देन हाउ मच मनी? आपकी क्या इज्जत है बाजार में, आपको कितना डैमेज हुआ, सामने वाले ने आपको कितनी गाली दी, कितना झूठ था, कितना सच था. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिफेंसेस, क्योंकि सामने वाला डिफेंस भी लेगा कि जी मैं जो बोल रहा हूँ बेइज्जती नहीं है, वो सच है. तो दिस इज अ राइट इन रेम. अब क्या किसी स्पेसिफिक आदमी के अगेंस्ट है आपका ये राइट फॉर देम नॉट टू डिफेंड? सबके अगेंस्ट आपके पास ये अवेलेबल, लेकिन करेगा तो एक ही ना. इस ग्रुप में से एक भैया उठ कर आएंगे ना. लेट मी जस्ट सी वेयर माय मार्कर इज. या सो एक बंदे को हम डेविल बनाएंगे ना, तो ये भैया आएंगे ना आपसे आपकी बेइज्जती करते हुए, एंड अगेंस्ट देम विल यू अप्लाई केस ऑफ टॉर्ट कि मुझे इधर आओ, तुम पैसे दो अब तुम, क्योंकि पैसा ही दुनिया की अब घोर कलयुग चल रहा है, तो पैसा ही सब कुछ है. तो पैसे दोगे तभी तो जो मेरी रेपुटेशन का लॉस हुआ है वो तुम पूरा करके दोगे. और वो आप कैसे करेंगे? You are going to apply for unliquidated damages because your right was violated because the other person owed a duty not to defame you, and combine all of this, that is a tort. अब होपफुली फंडा समझ में आ गया. अब आप ऐसे कहाँ लिखवाते रहेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट की. कोचिंग में जाऊंगा तो लाइट मेरे सिर पे नहीं गिरनी चाहिए, मनाली में ग्लाइडिंग जाऊंगा तो मेरी टांग नहीं टूटनी चाहिए. कहाँ लिखवा लेंगे, क्या क्या लिखवा लेंगे. सो इट इज बेसिकली कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ. There is no bare act to it. Now do you understand why the logic? Now when you, obviously I'm talking in very informal terms. Now when you write an essay, let us say that you're writing a mains ka answer, then you use simple language, but you use legal terminology such as rights, duties, unliquidated damages, these rights, CPC, this intro, then only will your essay get complete. All right. So to further explore all of this, if you want like that essay type knowledge, what to write in your law optional or mains ke paper, then obviously we're going to go here, and that's about it. I believe this has covered a lot of basics of torts, and I'm going to explore torts on a further basis on YouTube only in a dedicated playlist. So hopefully that this helps you out. See,
ये रटवा हर कोई सकता है कि बेटा ये रट लो, राइट इनपुट राइट एंड रन है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं इसी, बट ये है क्यों, बैराट क्यों नहीं है इस चीज़ की? अगर आप कानून में, चाहे आप लॉ ऑप्शनल करें, चाहे आप LLB करें, चाहे आप जुडिशियरी कल को जज बने, you need to understand that why is the law the way it is. Once you start understanding, once you take like one step back to the intent of the legislature and the creation of this entire system, you will understand things better. Now when you understand things better, then obviously you are far better than your competitors in a competitive exam or even generally in life, because you know a bit better. System तो हर कोई रट लेता है, बट उसको समझने और समझाने का ही इसीलिए इस चैनल का नाम टीचिंग लॉज ऑफ इंडिया है, rather than ratoing laws of India to you, right? So whenever you are also studying on your own, and every exam is clearable by studying on your own. It is not necessary that you need to go to coaching or you need to take like courses or whatever. वो सब क्या है, that वो चीज़ें आपके लिए बनी बनाई हैं, तो इट सेव्स यू टाइम, इट सेव्स यू कि एक बंदा कोई पहाड़ नेविगेट कर चुका है, दैट यू वांट टू टेक दैट गाइडेंस कि लेफ्ट मत जाना, राइट मत जाना, ऐसे चले जाओ, वैसे चले जाओ. या लेट अस से दैट यू नो द गोलगप्पा एग्जांपल दैट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, कि आप गोलगप्पे रेडी पर देते हैं तो 20 रुपये देते हैं, आपको 5 लगते हैं. लेकिन अगर आप गोलगप्पे खुद बनाने बैठ गए तो आपको पूरा दिन लगेगा. पहले आप उसको बैठ के तलेंगे, फिर चटनियाँ बनाएंगे, फिर सब कुछ करेंगे. जब तक आप गोलगप्पे खाने आएंगे तो आपको दिमाग में आएगा यार उसको 20 रुपये दे देता हूँ. दैट इज व्हाट द कोचिंग इज. बट कैन इट बी डन on your own? Yes, any exam can be done on your own, provided that you get a certain amount of guidance, and that guidance is not exactly very available for free, except a bit on this channel, and not on this channel. I'm sure there are a lot many as well. ठीक है जी, तो ये थे जी टॉर्ट्स के जी बेसिक्स. अब आपको बेसिक्स क्लियर है, जब आप टॉर्ट्स आप आगे पढ़ेंगे तो I'm sure a lot many things will get clear for you. All right, take care, bye bye.